ओशियन सीज एंड बायस, महासागर, समुद्र और खाड़ी। A very large expanse of a sea in a particular each of the main areas into which the sea is divided geographically। समुद्र का एक बहुत बड़ा विस्तार, विशेष रूप से प्रत्येक मुख्य क्षेत्र जिसमें समुद्र भौगोलिक रूप से विभाजित है। ओशियन है। सी, sea is generally smaller than an ocean is in fact a sea is usually part of a larger ocean that is practically enclosed by land। एक समुद्र आमतौर पर एक महासागर से छोटा होता है। वास्तव में समुद्र आमतौर पर एक बड़े महासागर का हिस्सा होता है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है। In this type of show in diagram, by, ये by, a by is a recite coastal body of water that directly connect to a longer main body of water such as an ocean, a lake, or even another bay। A large bay is usually called a Gulf Sea Sound or Bright। A curve is a small circle by with a narrow entrance। एक खाड़ी पानी का एक रिक्त निकाय है जो सीधे पानी के एक बड़े मुख्य भाग से जुड़ता है, जैसे कि एक महासागर, एक झील या यहाँ तक कि कोई अन्य खाड़ी। एक बड़ी खाड़ी को आमतौर पर खाड़ी समुद्र ध्वनि या बाइट कहा जाता है। एक को एक संकीर्ण प्रवेश द्वार वाला एक छोटा गोलाकार खाड़ी है। आर्कटिक ओशियन, so all of image Arctic Ocean। The Arctic Ocean is the smallest and the slowest of the world's five major oceans। It spans an area of approximately 14,060 kilometers and is known as the closest of all the oceans। The International Hydrographic Organization recognizes it an ocean, although some oceanographers call it the Arctic Mediterranean Sea। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे छोटा और उथला है। यह लगभग कितना है 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और सभी महासागरों में सबसे ठंडे रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन इसे एक महानगर के रूप में मान्यता देता है, हालांकि कुछ समुद्र विज्ञानी इसे आर्कटिक भूमध्य सागर कहते हैं। पैसिफिक ओशियन, this is all of diagram Pacific Ocean। The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's 5 ocean divisions। It extends from the Arctic Ocean in the north to the Southern Ocean in the south and is bounded by the continents of Asia and Australia in the west and the Americas in the east। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 5 महासागरीय विभाजनों में सबसे बड़ा और गहरा है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों और पूर्व में अमेरिका से घिरा है। अंटार्कटिक ओशियन, एंड दिस टाइप ऑफ सो अंटार्कटिक ओशियन डायग्राम।
The Southern Ocean, also known as the Antarctic Ocean, comprises the southernmost waters of the world. Ocean, generally taken to be south of the 60 degree as latitude and including अंटार्कटिक दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर के रूप में भी जाना जाता है, में विश्व महासागर का सबसे दक्षिणी जल शामिल है, जिसे आमतौर पर 60 डिग्री से सेंटीग्रेड अक्षांश से दक्षिण में लिया जाता है और अंटार्कटिक को घेरता है। इंडियन ओशियन, द बोथ ऑफ डायग्राम सी इंडियन ओशियन। The Indian Ocean is the third largest of the world. 5 ocean division covering the 7 crore 5,60,000 kilometer वर्ग और 90.8% of the water on Earth surface. It is bounded by the Asia to the north, Africa to the west and Australia to the east. हिंद महासागर दुनिया के 5 महासागरीय डिवीजनों में तीसरा सबसे बड़ा है, जो पृथ्वी की सतह पर 7 करोड़ 5,60,000 किलोमीटर वर्ग या 19.8% पानी को कवर करता है। यहाँ उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। अटलांटिक ओशियन, the show of a diagram in the Atlantic Ocean in the midpoint. The Atlantic Ocean is the second largest of the world 5 ocean with an area of about the 106,46,000 kilometer वर्ग. It covers approximately 20% of Earth's surface and about 29% of its water surface area. अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 146,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पृथ्वी की सतह का लगभग 20% है और इसके जल सतह क्षेत्र का लगभग 29% भाग कवर करता है। नॉर्थ सी, सो इन दिस डायग्राम नॉर्थ सी, the North Sea is a sea of the Atlantic Ocean between Great Britain, Norway, the Denmark, Germany, the Netherlands, Belgium and France, and Prick Sea on the European continental shelf. It contains to the ocean through the English Channel in the south and the Norwegian Sea in the north. उत्तरी सागर ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बीच अटलांटिक महासागर का एक समुद्र है। यूरोपीय महाद्वीपीय शेल्फ पर एक महाकाव्य समुद्र यहाँ दक्षिण में इंग्लिश चैनल और उत्तर में नॉर्वेजियन सागर के माध्यम से महासागर से जुड़ता है। Mediterranean Sea. This show in this diagram is the Mediterranean Sea, the middle of Europe, Asia and Africa. The Mediterranean Sea is a sea that connected to the Atlantic Ocean, surrounded by the Mediterranean basin and almost completely enclosed by land. On the north by Western and the Southern Europe and Anatolia, on the south by the North Africa and on the east by the लीवेंट। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा एक समुद्र है जो भूमध्य सागरीय बेसिन से घिरा हुआ है और लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। उत्तर में पश्चिमी और दक्षिण में यूरोप और अनातोलिया, दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और पूर्व में लेवेंट। रेड सी,
So in this diagram, Red Sea in this the South Arabia and Sudan, the Eritrea and Yemen is just all of in the middle of a Red Sea. The Red Sea is the seawater intel of the Indian Ocean lying between Africa and Asia. Its continuation to the ocean is in the south through the Bab el Mandeb and the Gulf of Aden. To its north lie the Sinai, the Peninsula, the Gulf of Aqaba एंड द गल्फ ऑफ सुजय. लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है. बाब अल मैडन द जल डमरू मध्यम और अदन की खाड़ी के माध्यम से समुद्र से इसका संबंध दक्षिण में है. इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, काबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी है. ब्लैक सी. This show of a diagram in Black Sea and a show of a map in this middle side in the Black Sea. And the Black Sea is a marginal Mediterranean and Sea of the Atlantic Oceans lying between Europe and Asia. It lies to the east of the Balkan and southeast Europe, south of the East European plain in the Eastern Europe, and north of Anatolia and west of the Caucasus both in the Western Asia. काला सागर अटलांटिक महासागर का एक सीमांत भूमध्य सागर है जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है. यह दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन के पूर्व में पूर्वी यूरोप में पूर्वी यूरोपीय मैदान के दक्षिण में स्थित है और अनातोलिया के उत्तर में और काकेसस के पश्चिम में दोनों पश्चिमी एशिया में है. कैस्पियन सी. Caspian show in this diagram. The Caspian Sea is the world's largest island body of water, often described as the world's largest lake or a full-fledged sea. कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी झील या पुनः समुद्र के रूप में वर्णित किया जाता है. Arabian Sea. So in this both are diagram in Arabian Sea is nearby India. The Arabian Sea is a region of northern Indian Ocean bounded on the north by the Pakistan, Iran and the Gulf of Oman, on the west by the Gulf of Aden, the Gudarful, the Channel and the Arabian Peninsula, on the southwest by the Lakdai, the Sea and the Maldives, on the southwest by the Somalia and on the east by India. अरब सागर उत्तर हिंद महासागर का एक क्षेत्र है जो उत्तर में पाकिस्तान, ईरान और ओमान की खाड़ी, पश्चिम में अदन की खाड़ी, गडाफुई चैनल और अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व और लक्षद्वीप सागर से घिरा है. मालदीव दक्षिण पश्चिम में सोमालिया और पूर्व में भारत से घिरा हुआ है. South China Sea. This show of South China Sea in this diagram. The South China Sea is a marginal sea of the Western Pacific Ocean. It is bounded in the north by the source of South China, in the west by the Indonesia Peninsula, in the east by the island of Taiwan. दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है. यहाँ उत्तर में दक्षिण चीन के तटों से, पश्चिम में इंडो चाइनीज प्रायद्वीप से, पूर्व में ताइवान के द्वीपों से घिरा हुआ है. जापान सी. So in this diagram of a Japan Sea, in the nearby South Korea. The Sea of Japan is the marginal sea between the Japanese archipelago, the Sakhalin, the Korean, the Peninsula and the mainland of the Russian Far East. The Japanese archipelago
Go is separates the sea from the Pacific Ocean. जापान का सागर जापानी द्वीप समूह सखालिन कोरियाई प्रायद्वीप और रूसी सुदूर पूर्व की मुख्य भूमि के बीच का सीमांत समुद्र है। जापानी द्वीप समूह समुद्र को प्रशांत महासागर से अलग करता है। कैरेबियन सी, the show is in this board diagram in the Caribbean Sea. Caribbean Sea in this middle of a map. The Caribbean Sea is the sea of the Atlantic Ocean in the tropic of the Western Hemisphere. It is bounded by the Mexico and Central America to the west and southwest, to the north by the Greater Atlantis, starting with the Cuba, to the east by the Lesser Atlantic, and to the south by the north coast of the South America. कैरिबियन सागर पश्चिमी गोलार्ध के उष्णकटिबंध में अटलांटिक महासागर का एक समुद्र है। यह मैक्सिको और मध्य अमेरिका से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में ग्रेटर अटलांटिक द्वारा क्यूबा से शुरू होता है, पूर्व में लेजर अटलांटिक द्वारा और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका के उत्तर तट से घिरा है। ग्रीनलैंड सी, so in this diagram Greenland Sea, both are diagrams show. The Greenland Sea is the body of water that borders Greenland to the west, the Svalbard archipelago to the east from the Strait, and the Arctic Ocean to the north, and the again the sea and Iceland to the south. The Greenland Sea is often defined as a part of the Arctic Ocean, sometimes as a part of the Atlantic Ocean. ग्रीनलैंड सागर पानी का एक पिंड है जो पश्चिम में ग्रीनलैंड, पूर्व में स्वालबार्ड द्वीप समूह, उत्तर में फ्रैम स्टेट और आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में नॉर्वेजियन सागर और आइसलैंड की सीमा में है। ग्रीनलैंड सागर को अक्सर आर्कटिक महासागर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है, कभी कभी अटलांटिक महासागर के हिस्से के रूप में। Baltic Sea, so in this diagram Baltic Sea. The Baltic Sea is an arm of the Atlantic Ocean enclosed by the Denmark, Estonia, the Finland, Germany, Latvia, the Lithuania, the Poland, Russia, Sweden, and the North and the Central European plain. The sea stretches from the 53 degree and to 66 degree and the latitude, and from 10 to 30 longitude. बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तरी और मध्य यूरोपियन मैदान से घिरा हुआ है। समुद्र के 50 डिग्री एन से 66 अक्षांश और 10 से 30 देशांतर तक फैला है। Ray of Hudson. This both are diagrams. So is the Hudson Bay, Hudson Bay, the sometimes called the Hudson Bay, is a large body of saltwater in the northeastern Canada, with a surface area of 12,30,000 kilometer square. It is located north of Ontario, west of Quebec, northeast of Manitoba, and the southeast of Nunavut, but politically entirely part of Nunavut. हडसन बे, जिसे कभी कभी हडसन की खाड़ी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी कनाडा में 12,30,000 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र के साथ खारे पानी का एक बड़ा शरीर है। यहाँ ओंटारियो के उत्तर में, क्यूबेक के पश्चिम में, मैनिटोबा के उत्तर पूर्व और नूनावुत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, लेकिन राजनीतिक रूप से पूरी तरह से नूनावुत का हिस्सा है। बे ऑफ बैफिन, the diagram show of Bay of Baffin, Avantia IMAA.
Baffin by the located between the Baffin Island and the west coast of Greenland is defined by the and International Hydrographic Organization as a marginal sea of the Arctic Ocean. It is sometimes considered a sea of North Atlantic Ocean. It is connected to the Atlantic via the Davis Straits and the Labrador Sea. बाफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के बीच स्थित बाफिन बे को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा आर्कटिक महासागर के सीमांत समुद्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे कभी कभी उत्तरी अटलांटिक महासागर का समुद्र माना जाता है। यहाँ डेविस जलडमरू मध्य और लेब्राडोर सागर के माध्यम से अटलांटिक से जुड़ा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस इज बोथ आर डायग्राम शो इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको. The Gulf of Mexico is an ocean basin and a marginal sea of the Atlantic Ocean, largely surrounded by the North American continent. मैक्सिको की एक खाड़ी एक महासागर बेसिन है, अटलांटिक महासागर का एक सीमांत बिंदु समुद्र है जो बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। Bay of Bengal, this is diagram showing a Bay of Bengal. The Bay of Bengal is a northern stream, the part of the Indian Ocean bounded on the west and northwest by India, on the north by the Bangladesh, and on the east by the Myanmar and the Andaman and Nicobar Island of India. बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है जो भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, उत्तर में बांग्लादेश से और पूर्व के में म्यांमार और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप से समुद्र से घिरा है। बे ऑफ बिस्काय, दिस डायग्राम शो ऑफ बे ऑफ बिस्काय. The Bay of Biscay now is spanning as the Gulf of Biscay, and in the France and some border region as the Gulf of Gascony is a Gulf of the Northeast Atlantic Ocean located south of the Celtic Sea. बिस्के की खाड़ी, जिसे स्पेन में बिस्के की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, और फ्रांस और कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में गैस्कोनी की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, सेल्टिक सागर के दक्षिण में स्थित पूर्वोत्तर अटलांटिक महासागर की एक खाड़ी है।